मैं एक चीज बोलने वाली थी, जैसे हर कोई को देखता है कि अगर बंदा ऊपर से खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से कोई खत्म नहीं है। तो अगर आप ऊपर से खुश हो, पीपल यूजुअली हैव दिस गलत समझते हैं कि ये तो सही है, इसको क्या जरूरत है किसी चीज की, ये तो ऐसी है, ये तो खुशी रहती है, इसके लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है। एंड पीपल उस बात को समझते नहीं है और उसके दिल में वो चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि यार मैं खुश रहती हूँ तो क्या मतलब, लोगों को समझ नहीं आता कि मैं I need someone I can talk to. Like सही आपका दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, बट वो कब तक आपकी बात सुनेगा? You need a professional to deal with those issues. And friends के साथ में biasness भी आ जाती है. Like they will say यार ये तुम तो सही हो, even if you're wrong, you're 100% wrong. नहीं भाई. So like do you think कि कोई characteristics होनी चाहिए personality में, या is it built in कि someone chooses psychology या बहुत talkative होना चाहिए या बहुत dig out information करने वाली personality होनी चाहिए, क्या मतलब? Hello, this is Fatima. And this is Ali Abdul. And welcome to the new episode of our podcast, in which we'll be decoding student life through the lens of psychology. Do you guys know that around 85% of students in Pakistan have little or more symptoms of depression? And globally, this is like a bit below. It's around 44%. But they have depression due to several reasons. So to discuss that only, we have invited our guests, Ayesha Khan. She is from Bahria University, 8th semester, and she's a brilliant student who's going to give us insights about her university life. Okay, thank you. Let's start this conversation. How are you, and how is your university life going? Thank you for that brilliant introduction. I'm feeling great today, very excited to be a part of this podcast. And I really wanted to talk about psychology since it's not discussed that much. It's still very much a taboo subject in Pakistan. And my student life has been, as always, सबकी ही roller coaster होता है सबका. अभी तो काफ़ी ज़्यादा feelings हो रही है. It's bittersweet. You're happy, it's ending. You're sad, it's ending. But yeah. That's nice. Of course, it's very tough and very hectic, I feel like. कैसे गुजार लिया? 8 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी में लिटरली मेरे 4 सेमेस्टर्स हैं और मैं तंग आ गया हूँ obviously. मेरे साथ तो ये हुआ था. I enrolled into university in 2020 में. And COVID आ गया. उसकी वजह से बस फिर there was online classes, उसमें कुछ navigate ही नहीं कर पाए and all that. It took us a lot of time. Like second year में हम properly university आना शुरू किया हमने, and then उस दौरान फिर हम सबकी friendships भी establish हुई, teachers से भी relationships establish हुई, and फिर जाके थोड़ा समझ आया, oh this is what we're studying. शुरू में we were totally clueless like you guys. That's nice. But अब जैसे psychology, इतने लोग मैं जानती नहीं हूँ जो psychology पढ़ते हैं, therapist वगैरह बनते हैं, तो what made you choose psychology? What was the point I can become a psychologist or a therapist? Also there's another question कि psychologist और psychiatrist में क्या फर्क है? अच्छा, तो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है. So I chose intermediate. सही है, सबका ख्वाब होता है, लड़कियों का तो especially they want to go into MBBS for God knows what reason. Societal norms है या कुछ है pressure. तो when I was there, I could not fit in at all because मुझे लग रहा था this is not this. एक होती है ना आपकी calling होती है. I did not feel that. So after I did my intermediate, I took like 6-month gap. वहाँ बहुत navigate किया. I talked to a lot of people and all that. तो इस वजह से I talked to my cousins as well. One of them was studying psychology as a minor. And she was like, you have that personality. Maybe you should try that. तो फिर I talked to a lot of people who were psychologists. And then I was like, चलो ये try करते देखते हैं. Maybe it would be my calling. And then I knew. In my first class, I was sitting there and I knew कि यार ये चीज़ करनी है. तो यही शायद motivation भी थी to keep myself there. So like, do you think कि कोई characteristics होने चाहिए personality में, या is it built in कि someone chooses psychology या बहुत talkative होना चाहिए या बहुत dig out information करने वाली personality होनी चाहिए, क्या मतलब? As such तो कोई traits तो required नहीं होते. I know a lot of people and there's a misconception there as well. Psychology सिर्फ clinical नहीं होती. There's organizational as well, educational भी है, child भी है.
तो इस वजह से देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया, क्योंकि आपकी 4 साल में इतनी ट्रेनिंग हो जाती है दैट यू बिकम दैट पर्सन who is able to, you know, show empathetic behavior and understand other people, उनके perspectives, उनके emotions and behaviors. And do you think कि like biasness कैसे वो cater करते हो psychology में, मतलब एक आ ही जाती है ना biasness, like मैं अगर कुछ मेरे सामने कुछ केस वगैरह आए ऐसा जैसा होता है, but मेरा तो हुआ कि मैं I'll feel bad and I'll feel वो, how do you cater that? अच्छा, तो साइकोलॉजी की एथिक्स और रूल्स में है कि यू हैव टू कीप योर बायसनेस लाइक टू योरसेल्फ. आपको बहुत न्यूट्रल रहना है, आपको अपने ओपिनियंस नहीं देना, आपको एक क्लाइंट को लीड नहीं करना. यू हैव टू मेक देम टेक द चार्ज, और उनको आपने रियलाइज कराना है कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट दे शुड डू, या कहाँ वो लैक करते हैं, कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड उस तरह से फिर यू नो वो होता है. एंड बायसनेस तो आई गेस आ जाती है, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट साइकोलॉजी इज़ कि आप अपने क्लोज रिलेशंस को नहीं कर सकते. लाइक इफ़ आई हैव अ फ्रेंड, आई कैन नॉट बी हर थेरेपिस्ट बिकॉज मुझे उसकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के बारे में पता है. Like वो emotional connection. इमोशनल basically. कनेक्शन, एग्जैक्टली. Insights too. या तो इस वजह से यू कांट डील योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. आप दूसरे लोगों को रेफर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट पर्सनली डील विद Yeah, I think वो सही भी है, obviously. Yeah. Yeah. Ethically भी वो correct एथिकली भी. होगा. एग्जैक्टली. तो वो एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि psychiatrist और I'm very curious to know about it honestly because you know I don't know the difference and बाकी सबको भी हमारे viewers जो हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो maybe you can clear that out. Yeah, मैं भी बहुत confused हो जाता हूँ. है ना, कभी-कभी terms याद ही नहीं रहते. ओके, सो बेसिकली साइकोलॉजी जो है उसमें हम थेरेपीज देते हैं. दैट्स मोर लाइक अ कन्वेंशनली अगर बात करें तो टॉप थेरेपीज ज़्यादा होती हैं उसमें. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट साइकियाट्री, दैट्स लाइक अ स्पेशलाइजेशन इन द मेडिकल फील्ड. तो आपको पूरा MBBS करके फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की स्पेशलाइजेशन करनी होती है. एंड देन द मेन कोर डिफरेंस इज थेरेपिस्ट नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते मेडिकेशन और साइकियाट्रिस्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर अ क्विक फिक्स, दे गो टू साइकियाट्रिस्ट. बेशक जबकि उनको ज़रूरत होती है कि दे गो फॉर टॉप थेरेपी एंड दे डू द इमोशनल कैथारसिस, बट देयर लाइक क्विक फिक्स है, मेडिकेशन लेंगे सही हो जाएंगे. तो इस तरह वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है. But what do you think? Do you like prefer a psychiatrist or you should just go to a psychologist? इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इशू. देखिए, अब ये है कि आप अगर कोई इंसान इतने सिवियरली डिप्रेस्ड है या इस तरह कोई इमोशनल स्टेट बहुत डिसरेगुलेटेड है, तो आप उस बंदे से आप कॉन्वर्जेशन करेंगे वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा ना. तो इस वजह से उनको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए रिहैबिलिटेशंस एंड साइकियाट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, मेडिकेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके बाद फिर साइकियाट्रिस्ट खुद ही रेफर कर देते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास. कि बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट अ पर्सन टू बी डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशन. Medications will. Sorry. So like you're in your last semester and तो यूनिवर्सिटी के थ्रू कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. I mean के अब 8th सेमेस्टर में आके तो वही like in this field obviously. Okay, thesis year भी होगा आपका, thesis होगा right? जी, तो thesis if you year can like just talk about it कि if you're allowed to कि क्या है. थोड़ा सा ओवरव्यू शायद दे overview सके. share कर सकते हो. तो हमारा थीसिस इज अबाउट द साइकोसोशल मोटिवेशन ऑफ फीमेल पॉलिटिकल वर्कर्स. क्योंकि एक तो देखें स्टेरियोटाइप है, मेल डोमिनेटेड फील्ड है, सही है, एंड वी वांटेड टू नो कि उनको क्या मोटिवेट करता है कि दे वांट टू ब्रेक दैट स्टेरियोटाइप, they want to break that glass ceiling जो है. तो we conducted interviews and उनको ही analyze कर रहे हैं, and it's been an amazing journey. Tough भी बहुत है obviously, but it's been amazing. And obviously findings तो अभी नहीं हम बता सकते, but ये हमारी thesis का gist था. And talking about my university life, obviously tough तो सबकी ही होती है. So it's हर न्यू सेमेस्टर में देयर इज अ न्यू चैलेंज यू हैव टू ओवरकम. जब हम पर्टिकुलरली जब आप DSM पढ़ रहे होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के,
तो जब आप वो सब्जेक्ट ले रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझसे रेजोनेट कर रहा है, ये मैं डिप्रेस्ड हूँ। बट ऐसा नहीं होता, हमें शुरू में बताया गया था कि आपको लगेगा कि आपसे रेजोनेट कर रहा है, बट दैट्स नॉट द केस। तो इस तरह हमारे साथ बहुत हुआ था, एंड thankfully we had mentors there, we had facilities there, कि अगर हम stressed होते थे तो we used to go talk to our teachers, या therapy facilities भी थी, तो उस तरह हमने deal कर लिया था. Oh, you had the facilities there. Yeah, we have. And like CDA college और next year college में जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ पर भी था. पाकिस्तान में like अगर हम CBM की बात करें तो उसके अंदर we don't have counselors or therapists, and I feel like कि ये होने चाहिए because हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. Now that you next year की जैसे आप बात कर रहे हैं उसके अंदर weekly therapy sessions और maybe monthly therapy sessions होते हैं. Counselors के पास जाते हैं लोग, they let their anger out क्योंकि it's confidential और ऐसा. But it helps a lot. Does Bahria has this? Yes, जैसे आपको बोला. जी, बहरिया की अपनी To think particular how है. important It is very important because honestly वो होता है ना कि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो एक स्टिग्मा भी अटैच नहीं होता, सही है. जब यू आर टेलिंग योर फैमिली दैट तो बहुत ज्यादा स्टिग्मा अटैच हो जाता है. वो खानाओं पर कॉल जा रही है, उसको कॉल जा रही है कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया है. Like suddenly आपने अपनी कोई चीज बताई, then next day आपको खानदान के सबसे मैसेजेस आ रहे होते हैं, what's happening bro? Yes, exactly that. अब्बू को तो जरूर चल गया. Exactly. हर पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते. Very true. तो इस वजह से आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह उनमें खुद होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स फील द नीड तो वो खुद ही चले जाएं. दे डोंट हैव टू टॉक टू अ पेरेंट, दे डोंट हैव टू बेग देम कि आई नीड थेरेपी, एंड उनकी 10 बातें सुनने से बेहतर है बंदा खुद ही जाके एक बात कर ले. Probably अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे भी तो एक्सेसिबिलिटी का इशू होगा. जैसे अब अगर CBM में है भी तो मुझे नहीं पता कि if there is one or not. Yeah, probably I guess accessibility issue, availability issue. Yes, very true. वो बहुत ज़रूरी है. Like you have to tell people as well. And to be very honest, जब लोग जाते भी है ना तो they keep it a secret कि you know यार ऐसी कान में बताएंगे यार मैं थेरेपी ले रही हूँ इस तरह कि you know taboo है. It's nothing to be ashamed of. Exactly, there's nothing. And you know what I've noticed is like कि जैसे therapist के पास जाना is very important. It's not something we talk about जैसे कि आपने बोला. But like you know कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फ्रेंड्स के पास जाते हैं and then they talk to friends. And maybe कभी कभार उनको वो सही एडवाइसेस नहीं मिलती जो आपको एक थेरेपिस्ट दे सकता है. वो आपको कंफीनेस नहीं महसूस होती, but they are so ashamed of going to a therapist कि they prefer कि मैं किसी और पे गुस्सा निकाल दूँ. और even if they are not talking तो वो I think वो anger में develop हो जाता है. आपकी जो inside feelings हैं they just burst out एकदम से. And yeah, that's very true that we have this tendency as humans to bottle up our emotions. और पे obviously हम इंसान हैं तो एकदम से जब volcanic burst होगा तो फिर it will affect all our relationships, personally भी, relationship wise भी, educationally भी. तो you know we need those facilities and I really hope Pakistan में accessibility आ जाए. I don't know, like I need to go to therapy. But there's nothing to be ashamed of. It's very important. Therapy sessions are very important. It's very important. और also एक जैसे फैक्टर होता है कि लोग कहते हैं कि we are good friends, वो सुन लेते हैं हमारी बात, लेकिन वो सिर्फ सुनने की हद तक होता है ना. They like I guess they don't have those qualities to like calm us down उस टाइम पर, but आगे जाके वो prolong होके एक प्रॉब्लम बन ही जाती है. Also you can't always depend on your friends, you know. Like सही आपका दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, बट वो कब तक आपकी बात सुनेगा. You need a professional to deal with those issues.
एंड फ्रेंड्स के साथ ना बायसनेस भी आ जाती Yeah, है. yeah. लाइक दे विल से यार ये तुम तो सही हो, इवन इफ यू आर रॉन्ग, यू आर 100% रॉन्ग. हम नहीं खुद भी भाई, ये कर रहे होते हैं, हम खुद भी कर रहे होते हैं. मेरे Exactly, very से मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, आई हैव टू से दैट यू आर राइट कुछ सिचुएशंस में. क्योंकि उन्होंने गुस्सा ना हो जाए, उसको बुरा ना लगे, उस पे बुरा ना लग जाए. गलत हो exactly. but करना पड़ता है दोस्तों के लिए. Yeah, वो तो बहुत जरूरी है. तो इस वजह से आई फील लाइक फ्रेंड्स आप रैंट आउट कर सकते हैं बट नॉट ऑल द टाइम, Not all the बिकॉज इट also causes issues in the friendship as well. Like आप एक इंसान के पास जाएंगे, अब for example relationship issues ले लें, अब उसके लिए तो सब जाते हैं, ठीक है. अब आप एक बार गए, 2 बार गए, 20वीं बार वो बोलेगा यार जान छोड़ दो उसकी, move on. And you don't need that. You need somebody to listen to, you know, catharsis होना. Catharsis is basically कि आप अपने emotions को vent out कर रहे हो, आप एक avenue दे रहे हैं. तो इस वजह से बहुत जरूरी होता है प्रोफेशनल्स के लिए. हाँ, true. और लाइक प्रोफेशनल्स के लिए भी ज़रूरी है, प्रोफेशनल ज़रूरी है. हाँ, प्रोफेशनल ज़रूरी है. अच्छा, प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है. से मुझे एक बात आई कि इन योर लाइक ये ऑल स्टडीज़ वगैरह और जो अभी सीख रहे हैं, तो इसमें हाउ अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें हो रही होती हैं. हाउ डू यू बैलेंस दैट विद व्हाट इज गोइंग टू कम from your clients, from everyone? आपके भी तो issues होते ही होंगे, like you are going to anxiety or whatever, जो भी जैसे midterms आ रहे हैं, finals आ रहे हैं, अभी thesis आ रहा है. How do you deal, like therapist की मैं पढ़ाई कर रही हूँ, psychologist बन रही हूँ, and I'm going through these emotions. How does it feel? How do you, अच्छा, like, so cope up? basically psychology में ये है कि, और psychologist के लिए भी required है कि आपका एक supervisor होता है, who is their psychologist. Like आप एक, अगर मेरी बात करें तो अगर मैं किसी को थेरेपी दे रही हूँ या मैं पढ़ भी रही हूँ, तो आई नीड लाइक अ सुपरवाइजर और थेरेपिस्ट जो जिससे मैं अपने बारे में कर पाऊँ. बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एम्पैथी बर्नआउट. अब आप इतनी एम्पैथी अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, यू विल नॉट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, यू वोंट हैव टाइम फॉर योर फैमिली. तो यू नीड एन एवेन्यू एज वेल. और आप जाहिर सी बात है, यू एज अ साइकोलॉजिस्ट यू एब्जॉर्ब पीपल एनर्जी. अब क्लाइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके नेगेटिव इमोशंस ओवरलोड हो रहे हैं या उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. तो व्हेन यू एब्जॉर्ब दैट, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट एज वेल. तो इस वजह से थेरेपिस्ट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हैव थेरेपी देमसेल्व्स, व्हिच आई थिंक इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है तो आप थेरेपी लें. इट्स जस्ट दैट sometimes you need somebody to talk to. Yeah, ये तो है. And like और somebody you need to talk to. और I guess यहाँ पर पाकिस्तान में अच्छा नहीं माना जाता साइकोलॉजी को. I guess के थेरेपी कर रहे हैं, वो थेरेपी कर रहे हैं, देखो पागल हो गया है, दिमागी मसला होगा कुछ, वो तो मतलब he's out of his mind, और डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी, कुछ नहीं होता डिप्रेशन एंजाइटी जैसा. ये हमारे ज़माने में तो नहीं होता था. हमारे ज़माने में तो किसी को डिप्रेशन नहीं होता था. अब क्यों हो रहा है लोगों को? तो वो जो नॉर्म्स हैं और वो जो कमेंट्स मिलते हैं, हाउ शुड वन डील विद दोस? अच्छा, सो बेसिकली इसमें इजाफा मैं ये करूँगी कि लोग हमें पागलों का डॉक्टर बुलाते हैं. हमें कहते हैं आप हमारा दिमाग पढ़ के बताएंगी एंड इस तरह की चीज़ें. तो आई फील लाइक यू हैव टू एजुकेट देम अ लिटिल, क्योंकि पाकिस्तान लैक्स दैट. हमें नहीं पता लाइक साइकोलॉजी होती क्या है, बस ये पता है लोगों का दिमाग पढ़ते हैं और ये डिप्रेशन से डील करते हैं. तो साइको एजुकेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू टेल योर पीपल, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन फैमिली. व्हेन आई परस्यूड साइकोलॉजी, तो मुझे बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की, तो मैंने उनको बैठ के बताया कि यू नो साइकोलॉजी इज बेसिकली आप लोगों के इमोशंस में हेल्प कर रहे हो, आप उनके जज्बात को यू नो केटर कर रहे हो, आप बिहेवियर्स को एनालाइज कर रहे हो एंड यू आर हेल्पिंग देम आउट. तो इट जस्ट लाइक डॉक्टर्स डू इन फिजिकल इंजरीज, वी डू इट फॉर मेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स यू कैन नॉट डील विद. तो साइको एजुकेशन इज समथिंग दैट वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इन पाकिस्तान एज वेल. एंड काफ़ी हद तक तो होना शुरू हो गई है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ न्यू पीपल
हर सेमेस्टर आई सी अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेश फेसेस, कितने बच्चे इनरोल हो रहे होते हैं, एंड आई एम लाइक यार शुक्र है, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड वी वर लाइक बहुत छोटे कम बच्चे, 20 का बैच हो रहा था, अब 40-50 के बैचेस आ रहे हैं एक सेक्शन में. तो आई एम ग्लैड दैट यू नो एजुकेशन बढ़ रही है, पीपल आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली आई गेस कोविड के टाइम पे, बिकॉज स्टेइंग एट होम इट ब्रॉट अप अ लॉट ऑफ इमोशंस. तो उसमें लोगों को एक्चुअली अंदाजा हुआ कि कितनी थेरेपी जरूरी है, एंड लोगों ने ली भी ऑनलाइन, एंड उस वजह से फिर आई गेस ये सिलसिला चलता रहेगा, अवेयरनेस बढ़ती रहेगी. तो अब जैसे कि यू नो आपने बात की कि हम दिमाग पढ़ लेते हैं यार, जैसे लोग बोलते हैं, तो लाइक दैट लाइक यू नो मिसकंसेप्शंस अबाउट साइकोलॉजी के हम लोग दिमाग पढ़ सकते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कैन यू एक्चुअली रीड आवर माइंड्स, और इज इट लाइक दिमाग में अभी क्या चल रहा है, और इज इट लाइक आप हमारे एक्सप्रेशंस और हमारे बिहेवियर को देख के आप बता सकते हो? No, we cannot read minds. That's a very common misconception. But ये है कि we can analyze people's behavior, जैसे लोग emotions जिस तरह show करते हैं, and जिस तरह उनकी कुछ habits होती हैं. For example, nail biting हो गई. I bite my nails too, you know. इसको पैर हिलाना, nervousness होती है, sweaty palms, इस तरह की बहुत चीजें. सारे symptoms मिल रहे हैं. No, please don't diagnose yourself. Please don't get triggered, it's okay. We're educating people. Educating people. Yeah. तो इन चीज़ों को देख के we can understand कि कोई underlying issue है. फिर obviously you talk to people, फिर it takes a lot of time for people to open up, and उस तरह फिर वो एक चलता रहता है. तो we cannot read minds, we just see what हम एक observation करते हैं, and उसके through फिर we can take this thing forward. Yeah, I had psychology in my A-levels too. Okay. मेरे सर रेहान टीचर थे, he was really good, yeah. तो मुझे भी थोड़ा सा शौक उठा था साइकोलॉजी वगैरह का, बट फिर वही बात है कि पागलों का. And also I had this misconception कि biology शायद important हो उसके लिए, तो I don't think biology important बिल्कुल होती भी है. important नहीं है. I know a lot of people who come from different backgrounds. लोग आर्ट्स से आए हैं, कॉमर्स से आए हैं, साइंसेस से भी आए हैं, बट इट्स नॉट लाइक. एंड द थिंग इज साइकोलॉजी जब आप लेते हैं ना, तो आपको स्टार्ट से स्टार्ट कराते हैं. तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में बायो था, हमें फिर पूरी न्यूरो भी पढ़वाई हमसे. मैंने मम्मी क्यों पढ़ा रहे हैं, बट देयर लाइक यू नीड टू नो द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन to understand कि किस तरह disorders हो रहे हैं. Yeah, exactly. Hormones, आपके happy hormones, serotonin, cortisol, इस तरह की चीजें हमें पढ़वाई उन्हें. हमें क्यों करवा रहे हैं? But obviously you need to know. Yeah. तो उस वक्त तो बहुत बुरा लग रहा था, बट अब you know. And the thing is कि उससे ये फायदा हुआ कि जिन लोगों का exposure नहीं था, they got to learn a lot. तो मतलब you can study psychology even if you're not you don't have a background from science biology. or anything. Nice. सब कोई बन सकता है. बहुत हर कोई, you need the, because I know you personally and she is very you know वो आपको देख के बता देती है कि आपके दिल में क्या चल रहा है. And like You should be a good observer. yeah, she's a very good observer. You should be a good observer. Oh, ऐसे मेरे को points देती है ना कि हम कहते हैं, oh my god, is she in her head right now? No, I've never been in your head. That's a quality I admire about you, and that actually helps us too कभी कभार. Good observer, not reading minds. I'm sorry. yeah, but like मैं कहती कि like feel like she's reading our mind. She's in our head. yeah, that's pretty where good our thing about misconception stems for, because you are Yeah. so word behaviors इतने जैसे facial expressions give so much, we just don't know. जब पढ़ने आ तो फिर समझ आते हैं कि ओ अच्छा ये स्ट्रेस लग रहा है, बंदा लग रहा है and all that. तो you know. Can you like I don't know if you would but कब पता चले किसी को इंडिविजुअल someone को कि अब मुझे टाइम है थेरेपी लेने का. Well, there's जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
we are going through everyday lifestyle, वही routine, everything. So yeah, एक student को कैसे पता चलेगा कि अब मुझे therapy की ज़रूरत है? Okay, so वैसे तो there's no particular time जब आपको होता है, but sometimes जैसे हमने burnout की बात की थी, that's very common. And particularly पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम अगर आप सब जानते हो तो फिर वहाँ तो बस एक रगड़ा है, तो करना रट्टा मारना है, sleepless nights and that 75% attendance, बस फिर इंसान मर भी रहा हो तो बस also an A grade जो अम्मी अब्बू को चाहिए होता है, सोसाइटी को चाहिए होता है. वो सारी चीज़ें जब बर्नआउट होना शुरू हो जाता है वे यू कांट कोप विद थिंग्स. ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पर्सनल एग्जाम्पल अगर मैं दे सकूँ तो आई हैव टेकन पर्सनल थेरेपी. ठीक है, एंड दैट वाज दैट पॉइंट इन माई लाइफ फिर आई थॉट आई कैन नॉट स्टैंड इट, मुझसे नहीं हो रहा था. तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, दिस इज़ मी बीइंग अ हिपोक्रेट. अगर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि you have to take it, you have to like seek help and talk to other person ताकि आपको थोड़ा perspective मिले, and you're in your head a lot, you need a person to confide in. So why can't I do that for myself? And I thought I deserved that. तो then I sought therapy. 1-2 महीने की थी because मेरे बहुत temporary issues थे, like बहुत burnout हो रहा था and I just needed somebody to clarify things for me. And my therapist was an amazing person, God bless her, and she helped me a lot. तो इस वजह से आई फील लाइक जब आपकी लगता है ना कि आप बर्स्ट आउट होने वाले हो, आपसे नहीं हो रहा, एंड आप मतलब यू आर लैशिंग आउट एट पीपल जब जिनका कसूर भी नहीं होता, तो फिर जब बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं ना, दैट्स वी एक्चुअली रियली नीड टू गो. बट ऐसा कोई टाइम स्टैम्प नहीं है कि आपको इसी वक्त जाना है. यू कैन टेक थेरेपी फॉर द मोस्ट छोटे issues, बड़े issues. Because for therapists there is no judgment. अगर मेरे लिए एक छोटा मसला है, मेरे क्लाइंट के लिए वो बहुत लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकती है. So that I'm really glad that you talked about that and your personal experience. Yeah. That might help a lot of people seek therapy, and that's a good job. I think अब हल्के कॉमन हो रहा है थेरेपी लेना. मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो ले रहे होते हैं थेरेपी, एंड दे डू टॉक अबाउट इट, एंड इट्स लाइक काफ़ी नॉर्मल. अब आई गेस थोड़ा डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात आ जाती है. वही जनरेशनल थिंग सही है. जनरेशनल बेबी बूमर्स मिलेनियल्स को इतना नहीं कर सकते, बट जेन जी एंड उनसे आगे वाली और लोगों को लगता है कि जैसे अगर कोई बोल रहा है ना कि मुझे ये है तो वो बहाने बना रहा है. यस, बहुत लोगों को क्या पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि ये बहाने बना रहे हैं बचने के लिए, और आई गेस गलत है. लोगों का बहुत गलत है एक्चुअली. नहीं होना चाहिए कि यार एक बंदा इतना ट्रिगर हो रहा है, इतना डिप्रेशन का शिकार है, आप उसका मजाक उड़ा के आप उसको और बुरा फील करवा रहे हो. दिस लीड्स टू लाइक आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट, लाइक schizophrenia है, एंड आई डिडंट से दैट राइट. क्या सही है? schizophrenia है राइट. जैसे ये है वगैरह डिसऑर्डर्स, तो आई थिंक ये सब इन चीज़ों से ही डेवलप होता है. schizophrenia is different from depression. सही है. नहीं, I'm just talking about like I need to know about both of these things differently, obviously your perspective on these types. So basically schizophrenia जो है it's a loss of reality contact. जैसे हम हैं, हमारी consciousness में we are aware of what's happening, हमारी cognition is working, thinking ability है. जब एक इंसान schizophrenic हो जाता है उनको reality contact नहीं होता, they hallucinate. अब hallucination में कुछ भी हो सकता है, auditory भी हो सकता है, visual भी हो सकता है, and it is just very scary for a person. You don't know what's real. True. And delusional वो जो आजकल चल रहा है, delulu is the sululu, मतलब उधर से स्टेम हुआ है, but delusional disorders and all that भी वहाँ से आते हैं, स्टेम होते हैं. एंड यहाँ फिर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को कोई एवेन्यू नहीं मिलता, बिकॉज पीपल थिंक काला जादू हो गया है, नज़र लग गई है, and that's not always the case. That might be a case, ठीक है, I'm not denying the existence of that, but कभी कभार medical professional help आप ले सकते हैं. Like you need to discover all the avenues, you need to go to every place, you need to go to a psychiatrist
और उनकी रिहेबिलिटेशन उनकी प्रॉपर करनी चाहिए, बिकॉज देर थ्रेट टू देमसेल्व्स एज वेल एंड देर द थ्रेट टू अदर पीपल. दे कैन हर्ट देमसेल्व्स बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स रियल. तो यू नो इस वजह से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे भी लाइक एक कोई जानने वाले दूर के हैं, इट्स लाइक फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, उनके आई गेस किसी को उनके बेटे को था schizophrenia ना, सो ही वुड लाइक डू लाइक वो बैठे बैठे कुछ भी मतलब he would be like, should I pick this up and throw it on your face, and like should I do this, should I do that, and they had to like be so like cautious about it कि उनको कमरे में मतलब लाइक कमरे में से चीज़ें दूर रखनी पड़ती थी, कांच की चीज़ें एंड शार्प थिंग्स, नाइफ्स वगैरह. सो आई गेस काफ़ी बड़ा इशू है ये, जिसके बारे में लोग नहीं बात करते और सोचते हैं कि ये कोई लोगों को अवेयरनेस नहीं है बेसिकली, लोगों को पता नहीं है. यार हम ऑब्वियसली अब इस्लाम में इतना, और यू नो आप जिसके पास भी जाओ, अगर आप नेबरहुड में आंटियों के पास चले जाओ नजर तो फिर वही बोलती है ना कि भाई कुछ नहीं होता, नजर लग गई है और नींबू रख लो और चाकू रख लो, क्या ना नजर रखना is a thing, काला जादू is a thing, but not always. But not always, yeah. अगर कोई हद से ज्यादा हो जाए, you need to go to a therapist or a psychologist. Like आपको करना पड़ता है, like basically आपको जरूरत होती है. एंड टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, ठीक है, अब डिप्रेशन इज़ अ बहुत एक जनरलाइज भी हो गया, ठीक है, एंड एक बहुत मिस इन्फॉर्म्ड वे भी हो गया. पीपल डोंट नो व्हाट द सिवेरिटी ऑफ डिप्रेशन इज़. डिप्रेशन का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि 1 महीने तक आपको ये सिम्टम्स होने चाहिए, जैसे होपलेसनेस हो गया, आपको ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, यू कांट फील एनी थिंग, यूर नम, you don't have the motivation to do anything at all, you're not eating, you're not sleeping, but you're just there as a mass. And people sometimes you know misdiagnosis भी होती है, ठीक है, and वो लोग फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. sadness is not depression, it does not equate. sadness is real, sadness भी आपको बहुत hindrance cause करती है, ठीक है, I'm not saying that that's not वो, but depression is an extreme form of that. So like क्या हुआ? मैं एक चीज़ बोलने वाली थी, जैसे यू नो हर कोई को देखता है कि अगर बंदा ऊपर से खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से कोई ख़त्म नहीं है. तो यू नो अगर आप ऊपर से खुश हो, पीपल यूजुअली हैव दिस गलत समझते हैं कि ये तो सही है, इसको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, ये तो ऐसी है, ये तो खुशी रहती है, इसके लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं है. एंड पीपल उस बात को समझते नहीं हैं और उसके दिल में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि यार मैं खुश रहती हूँ तो क्या मतलब. लोगों को समझ नहीं आता कि मैं I need someone I can talk to. So there are multiple defense mechanisms, ठीक है, and that's one of that's masking. कि आप अपने inert feelings and उन सब चीज़ों को नहीं दिखाते, आप नहीं करते, कि आप शो नहीं होने देते लोगों को कि आप actually अंदर से feel क्या कर रहे हैं. And that's actually very very common, and that's actually very sad, because sometimes you think, yeah, this person is so jolly, they're so happy, and that they're just masking. They need help, but they don't know who to ask. They don't know how to talk about it. So इसलिए what should those people do कि यार if of course they need help, तो मतलब उनको क्या करना चाहिए? Because अब वो तो mask करना है ना अपनी feelings को, उनको तो नहीं समझ आ रहा कि हमें कैसे करना है. तो do you have something they can try or? Well, personally तो they can मतलब obviously try therapy and talking to people, सही है, because as a human you need safe places, you need to confide in another soul. अब वो therapy के form में हो, friendship के form में हो, कोई भी form इंसान ले सकता है, but जब आपको help चाहिए होती है, you can't deny that. And masking के लिए you need to वो होता है ना कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं इंसान को, एंड एक वो भी होती है कि यार मेरे इश्यूज़ बहुत कम हैं, you have that low self esteem and you think your problems are not that important, but every problem is important. If it's troubling you, it's important. It's important, yeah. And वो एक बात होती है ना, that every listener needs a listener. Yeah. Yeah, it's like a common
हर ब्रेकअप उस पर आया हुआ होता है, ब्रेकअप फोन ब्रेकअप स्टोरीज पे, बट आई थिंक इसकी बहुत डीप मीनिंग बहुत डीप है कि जो नहीं बात कर रहे होते इस बारे में, या जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते, दूसरों की सॉल्व कर रहे होते हैं, हमेशा दूसरों की सुन रहे होते हैं, दे आल्सो नीड समवन हू And that's a way of avoidance, ठीक है? Like they're avoiding their own problems. They're trying to fix everything else, and they're like, no, I'm not gonna think about you. I'm gonna focus here. तो ये वाली चीजें हैं. Right, obviously therapy Important. very important, a very good thing I personally learned in this session and talking to you and how you explained things. I was really nervous about what I was gonna say, but it has been amazing. Like naturally हो रहा है, and you know, सब वो है. वन थिंग जो मतलब आगे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, दे उनके लिए एक चीज you want to tell them that why they should come here and why they should be there for others. You want to say something about that? Personally, I believe कि people should come in this field. ठीक है, बहुत even if पाकिस्तान में साइकोलॉजी बढ़ रही है, उस रेट पे नहीं बढ़ रही. We cannot match up to US, UK उनके stats, ठीक है. तो we need psychologist here and we need like awareness होनी चाहिए. लोगों को अपने आप को साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है. एंड उसके वो कौन करेगा? जब साइकोलॉजिस्ट बनेंगे लोग तो वो करेंगे. तो ये वाली बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. एंड अ थिंग टू मोटिवेट देम इज़ कि यू नो यू लिसन टू योर फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट. तो आप लाइक उस तरह हेल्प करते हो, आप दूसरों की भी हेल्प करते हो. तो यू व्हेन यू कम इनटू साइकोलॉजी यू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ एज वेल. तो इन दैट सेल्फ एक्सपोजर, सेल्फ एक्सपीरियंस वाली थिंग एंड अपनी आइडेंटिटी के लिए भी इंसान कर सकता है साइकोलॉजी ज्वाइन. To the university students that are going through all of this, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं अभी, और एग्जाम्स की वजह से, स्टडीज की वजह से, आगे फ्यूचर की वजह से, जॉब्स की वजह से, बिजनेस की वजह से, तो उनके लिए यू कुड से समथिंग के वेल आई वुड से कि आप किसी तरह भी अपने आप की इमोशनल कैथारसिस करें. किसी तरह भी टॉक टू अ फ्रेंड, गो टू थेरेपी, डू एनीथिंग यू कैन. इवन इफ आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप ग्राउंडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू आर टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. तो उस अपने स्ट्रेस और अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें. ज़िंदगी में मसले तो आते रहेंगे, बट यू नीड टू हैव दैट ग्रिप इन योर लाइफ. यू नीड टू बी अ मास्टर ऑफ योर सेल्फ. यू नीड टू कंट्रोल योर नर्वस सिस्टम. कि हर परेशानी पे यू आर नॉट गोना बी शाइंग अवे फ्रॉम इट. अब क्या होगा, अब क्या होगा, यू या एग्जैक्टली अब क्या होगा, एंड एंशियस नहीं होना. तो अपने आप को आप अपने सेफ वेन्यूज ढूंढें. एंड ग्राउंडिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, इन चीज़ों में सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है, वी निगलेक्ट आवर सेल्फ. स्टूडेंट लाइफ हो गई 20-30, बल्कि एवरीबडी आई गेस वी निगलेक्ट आवर सेल्फ. वी नीड टू टेक आउट टाइम फॉर आवर सेल्फ and connect with our inner nervous system, and by that I guess we will be able to control our stress. And I think teachers वगैरह का भी इसमें काफी रोल प्ले होगा. काफी रोल होता है. Exactly. They should be more understanding. Mentors, yeah, exactly. They should go to their teachers. If they need to talk about it, and you know, advice लेना is very important. And teachers need to understand too कि problems होती हैं सबके साथ. कुछ बच्चे नहीं होते ऐसे, कुछ होते हैं जो आराम से cater कर लेते हैं. Individual differences, exactly. And कुछ में होती हैं problems, उनको थोड़ा सा lenient हो के like. And I think teachers वगैरह के लिए तो ये होना चाहिए कि they should go through these psychology workshops वगैरह, ताकि उनको पता चले कि वो students क्या से गुजर सकते हैं. वो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक अलग फील्ड है. तो दे शुड कनेक्ट विद दैट फील्ड एंड दे शुड हैव डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट फॉर they should basically train themselves to be equipped to deal with students' issues. अब स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, 3 साल का 4 साल का बच्चा भी हो सकता है, 20-25 का भी हो सकता है, और हर स्टेज पे डिफरेंट बंदा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है. तो दे शुड हैव दोज ट्रेनिंग्स टू बी बेटर इक्विप्ड
कि आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा है जो एक्चुअली लाइफ में क्राइसिस के लिए गुजर रहा है, तो दे शुड बी मोर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम. तो आई फील लाइक दैट्स वे वी लैक एज ह्यूमंस. हम कभी कभार ना एम्पैथी नहीं दिखाते जहाँ हमें दिखानी चाहिए. तो that is something very important. Thank you so much. Yeah, thank you so much. This like conversation. This is very educational for us too, because business majors are We all know everyone does go through something in their life, and we know how to cope up with it now. Yeah. Or like, actually. is there वैसे any place here around where we live और जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं इसके लिए सेशंस वगैरह के लिए? Because I heard Clifton में कोई psych cares के नाम से है. Psych cares है. There are multiple institutions जहाँ psychologists बैठते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, थेरेपीज भी होती हैं. एंड जैसे साइक केयर्स हो गया, काजिम ट्रस्ट हो गया, डॉक्टर आयशा का एक हॉस्पिटल है वो हो गया. एंड Bahria has their allowed and दूसरे लोगों को जाना. आउटसाइडर्स आर अलाउड. अच्छा, outsiders allowed है. जी. अब दोस्तों से मिलने जब बहरिया जाएंगे तो अपनी Thank you so much, and let's wrap this up now. This is just one question we would like to ask. कि आपको क्या लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाना चाहिए? Maybe related to your field. Related to my field, तो एक बहुत important चीज़ है licensing. ठीक है, people should be like, जैसे मेडिकल का लाइसेंस होता है वैसे साइकोलॉजिस्ट को भी लाइसेंसिंग का ज़रूरी होता है. दे शुड पास टू दैट प्रोसीजर, क्योंकि एथिकल वायलेशन इज समथिंग यू कैन नॉट अलाउ. एंड क्योंकि पाकिस्तान लैक्स दैट तो बहुत ज़्यादा होती है. जैसे बैचलर्स के बाद यू कैन नॉट गिव थेरेपी, दैट यू हैव टू बी मास्टर्स आपको होना चाहिए, बिकॉज यू नो एक्सपोजर एंड ऑल दैट. अभी तो हम लर्निंग फेज में हैं. उसके बाद मास्टर्स में वी विल हैव दोस ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद वी विल बी बेटर इक्विप्ड. तो दैट्स वन थिंग. एंड एजुकेशनल सिस्टम्स के लिए आई फील लाइक थेरेपी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड यू नो बच्चों को खुद भी एजुकेट करना चाहिए कि यू नो दिस इज़ अ रियल थिंग. मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियल. It's not in your head. Break all those stereotypes. Like खत्म कर दो वो चीज़ें. It's not a taboo to take therapy, and that's like everyone needs awareness. Parents, teachers, themselves, individuals themselves also. Thank you so much, Miss Ayesha Khan. Thank you so much. Soon to be a therapist. Yes, inshallah. Thank you so much for giving us our insights to our audience and educating us and the viewers who will be watching this. And also we were discussing all this and we were like laughing and all to make it more comfortable. But this is a like really serious issue. हाँ, जो हमें लोगों तक पहुँचानी थी. So yeah. Thanks guys for joining us today in our podcast, and you guys can reach us out at our Facebook community group named as Communical. The links has been given down below. You can give us suggestions there about the new topics that we are going to be covering in our next podcast. Also, if you guys want to be a part of my podcast, तो आप लोग हमें वहाँ पे contact कर सकते हैं, and then we can call you up here and have a discussion with you guys. Thank you so much. thank you. Allah Hafiz.